मीडियम वेव 406.5 मीटर 738 किलोहर्ट्ज पर 101.9 मेगाहर्ट्ज FM बैंड और न्यूज़ ऑन AIR इस मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का हैदराबाद केंद्र है। प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम महिला संसार। सभी बहनों को मेघना डब्बू का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत धारा होती है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ये एक सप्ताह हम विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। इसका उद्देश्य माँ के दूध के फायदों को जागरूक करना और स्तनपान को बढ़ावा देना है, स्तनपान को सक्षम बनाना है। तो बहनों, विश्व स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में सुनते हैं माँ का दूध अमृत धारा। इस विषय पर डॉक्टर रेवती रामस्वामी से सीमा कुमारी की भेंटवार्ता। आइए सुनते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2023 सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाएगा। इसी वृतांत के अंदर और इसी के अंदर हमने आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर रेवती रामास्वामी जी को, जो कि सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं अपोलो सिकंदराबाद की। डॉक्टर रेवती रामास्वामी जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत। थैंक यू वेरी मच सीमा जी, इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल टू बी विद ऑल इंडिया रेडियो। Thank you so much, ma'am, to be the family, one of the part of our AIR family. अच्छा मैडम, we will start our question कि हम जानते हैं कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। ऐसा क्या हम चाहते हैं अपने श्रोताओं से या फिर जो जनमान्य लोग हैं उन लोगों से, हम ऐसा क्या चाहते हैं कि ये 1 वीक जो है वो पूरी तरह से ईयर मार्क्ड है ब्रेस्ट फीडिंग को पब्लिसाइज। जैसे आपने बहुत सही बोला कि इट्स सच ए नेचुरल इवेंट। ब्रेस्ट फीडिंग इज समथिंग सो नेचुरल। सी, इफ यू सी इवोल्यूशन, वी आर मैमल्स और अ मैमल इज नोन बाय मदर फीड्स द चाइल्ड। That is the classification of a mammal. Now, why are we talking? इतना कुछ हम breast feeding के लिए 1 हफ्ता हमने क्यों devote किया है? Why? Because today the practice is considered by many as not so important. Yeah, earlier there was a time when it was out of fashion, and we need to bring it to the public domain. Every mother, the family, the society must know that breastfeeding is absolutely important, and it is the right of the child. We are actually, fashioning a future generation. The baby who is born is a future citizen, and it is a birthright that child gets what it deserves to get. So we need to keep talking and talking. That's why 1 full week is devoted to breastfeeding. Yeah, that's why we are celebrating breastfeeding week. Yes. Yeah, madam, but एक जो सवाल मेरे अंदर उमड़ रहा है वो ये है कि अभी हम क्यों इतनी बातें कर रहे हैं? हम बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस इज नॉट देयर, इट इज लॉस्ट। समथिंग सो नेचुरल, इट इज लॉस्ट। एंड अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं तो इफ यू सी द इवोल्यूशन, अर्ली पीपल न्यू दैट यू हैव टू ब्रेस्ट फीड, एंड देन द वेरियस कल्चर्स केम इन, एंड there was a time in the West wherein the elite and the royalty, jo Raja, Rani and all those elite people, especially in the West, the aristocrats jo bolte hain na, they didn't breastfeed. They used to keep somebody called as a wet nurse. Yeah. A wet nurse is somebody employed by them to feed their child. And बहुत सालों से ये चलता रहा. तो there was a revolution there, कि social reformers, you cannot rely on a wet nurse. उनका nutritional status we don't know, उनका health status we don't know. And so it's not right. So when that transition came, the second thing which came in is formula feeds. Okay. So formula feeds started invading the market. And you had all kinds of formula feeds, and the mothers who didn't want to breastfeed for various reasons, they took to formula feeds. And even today, the formula feeds are able to advertise in such a big way कि चलेगा, if you don't want to breastfeed, fine, we are there for you, we are better, we are less painful, we are so much easier. And so the attraction towards formula feed is very high. That is the second thing. So the other thing is, if you see today the challenges which women face, a lot of women earn, they go out to earn, and they have itne sare capacities, their artistic talents, their technical talents, they want to express everything. So they need to step out from home. Yeah. And at that time again,
if you have to feed a child for 6 months to 1 year to 2 years, that becomes challenging. And there are times when women take the easy way out. So we need to educate, we need to change, we need to make them, to make them open to the facts. That is the reason why we are talking so much about it today. मीन्स कहीं ना कहीं आपने जो बात कही है वो बिल्कुल खरी उतरती है कि महिलाएं जो हैं वो बाहर निकल रही हैं, तो इस बात की समस्या उनको है कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कैसे लगातार कराएं, जो एवरी 2 आवर हमें फीड कराना होता है बच्चों को, वो कैसे करा पाएंगे, और हाउ दे विल कोप अप विद दिस चैलेंज कि बाहर भी निकलना है, अपने आप को जो टैलेंट है उसको एक्सपोज करना है और बच्चे को भी पालना है. इवन चैलेंजेस ऑफ वर्कफोर्स आर सो मच ना, कंधे से कंधे मिलाकर दे हैव टू वर्क. तो कंधे से कंधा मिलाकर ये बच्चा भी है ना बाजू में, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बेबी. दैट इज one thing. And so in fact this year the challenge, the breastfeeding का जो motive है, it is making breastfeeding at work. तो जो काम कर रहे हैं वो at workplace you have to ensure that the mother is able to breastfeed the child. That is a challenge now. वेरी गुड मैम. आई थिंक जो मोटो है वो सही साबित हो, और जहाँ भी जो एम्प्लॉयर हैं जो भी अपने एम्प्लॉय को ये सुविधा उपलब्ध करा देते हैं, इट विल बी अ बिग स्टेप फॉर सोशल रिफॉर्मिंग. Yes, it has already started in a very big way, and we are just a small, minute contributors to this. Very good, ma'am. अच्छा, next we will move to the next question, ma'am. ये जो importance of early breastfeeding होता है और जो importance of colostrum होता है, वो क्या होता है? Yeah. So this is something very important कि many mothers, when we deliver them, they say कि हम लोग को we don't breast milk आता ही नहीं है और हम formula feeds दे देते हैं. They are all ready with their lactogens and all that stuff. So what is very important and what we need to know is, you see a cow who has delivered a calf, the calf will immediately find its way and feed. It doesn't need to be taught. It's the same thing with human beings. So when a baby is delivered, if you leave the baby and the mother alone, the baby will find its way to the breast and it starts feeding. And the desire is, pehla ghanta mein, the first hour of birth, you have to allow the baby to feed the mother. So there are huge advantages. So how early do you feed? Immediately after birth, within 1 hour of birth. इससे होता क्या है? बट मैडम कभी कभी ये भी होता है कि माँ को within 1 hour of birth दूध नहीं आया तो? Yes, absolutely. It takes time for the actual milk to start. But जो भी आता है, even if it's a secretion, it is called as liquid gold, the colostrum. Wow. It is called as, the natural vaccination. जो प्राकृतिक टीका जो होता है, वो जो अभी आता है, आपको लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, लेकिन जो भी आ रहा है, it is of so much value. And that is called as colostrum. And what is colostrum? मदर के बहुत सारे एंटीबॉडीज, जब मदर इन्फेक्शंस को एक्सपोज होती हैं तो उनमें एंटीबॉडीज बनते हैं, तो वो सारे एंटीबॉडीज बेबी को शी इज एबल टू गिव. शी इज गॉट इम्यूनोग्लोबुलिन्स, शी इज गॉट लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ऑल दीज दे डिस्ट्रॉय. जो भी इन्फेक्शन बच्चे में होता है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने की शक्ति मदर के मिल्क में होती है. प्लस कोलेस्ट्रॉल, देयर इज लिपिड्स, फैट्स, बच्चे के न्यूरल डेवलपमेंट के लिए विटामिन, जिंक, कैल्शियम, कितना सारा, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच द मदर्स मिल्क हैव विच इज़ नेचुरल. और वो ये फर्स्ट 5 days में बच्चे को मिलता है. तो नेवर से कि बर्स्ट मिल्क आ नहीं रहा है, यू नीड टू फीड. एंड एज द बेबी सक्स ना, द मदर का वो स्टिमुलस इज टू प्रोड्यूस मोर मिल्क. तो दैट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑल्सो. तो आता है, नहीं आता है, लेट द बेबी लैच ऑन टू द ब्रेस्ट एंड फीड. दैट इज द मंत्रा एंड दैट हैज टू बी डन. There is no other alternative. ओके, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मदर को अगर नहीं आ रहा है नेचुरली मिल्क, अगर निकल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिला नहीं सकते. नहीं, एब्सोल्युटली. अच्छा मैडम, कभी कभी क्या होता है, अभी जब आप आंसर कर रहे थे इस क्वेश्चन का, तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि कभी कभी माँ जो होती हैं वो दे आर नॉट इन दैट पोजिशन टू फीड द बेबी. दे मे बी इन द ICU, they may be not conscious that time because of that C-section and all. नहीं, C-section में कॉन्शियसनेस तो आ जाता है जब मींस इफ एनी प्रॉब्लम ही रहती है. नहीं, मतलब प्रॉब्लम इज देयर, तो इतना सीरियस सिचुएशन का तो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट. वी आर टॉकिंग ऑफ अ नॉर्मल सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी. दैट टाइम आल्सो वी आर हैविंग एनी अदर अल्टरनेटिव टू स्टोर एट लीस्ट दैट कोलेस्ट्रम थिंग्स.
Actually, the baby can feed the mother. Even if the mother is, as long as the mother is not on any harmful medication which can harm the baby can feed the mother. The baby can always latch on to the mother's breast and suck. Okay. That's always possible. Only if we say the mother should not feed the baby for some reason. Only then we think of anything else. उसमें भी we express mother's feed ना. Mother का feed को express करके baby को पिलाते हैं. अच्छा, तो while answering this, मतलब हम जब इसको आंसर कर ही रहे हैं तो we will go move to the question like breastfeeding in difficult situations. How we will cope up with that? तो अभी आप जो बोल रही थी was one of the difficult situations. But then, you know, अगर मदर को एक काफी serious infection हुआ हो, like HIV and all. अगर HIV का भी, the thing is that if you give the right medication for the mother so that the HIV doesn't spread to the baby. So antiretroviral drugs, देकर we still encourage. Serious infection, treat the infection, give baby-friendly antibiotics and feed the child. Okay. There are some very, very rare situations, say mother is having cancer and she's having to take chemotherapy. There are some such rare conditions wherein, we should not feed the baby. Okay. But in general, we look at ways and means by which we can feed the baby. अच्छा, हमारे यहाँ क्या है जो ये मिथ है कि अगर माँ को वायरल भी है तो if they are suffering from cold and cough and fever and all the things, they can't feed the baby. No, that is absolutely wrong. Take your protections. Mother has to wash her hands. She can wear a mask. But the milk is great because that milk has got the antibodies. Okay. So it's going to protect the baby. So no circumstance, hardly any circumstance you find where you have to isolate the baby from the mother. Okay. मैडम, ये आजकल जो है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत फैला, मतलब बहुत चर्चे में है, तो ये एग्जैक्टली होता क्या है? सीमा जी, उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कब तक हम ब्रेस्ट फीडिंग दें. जी हाँ, तो ये तो हमने एस्टेब्लिश किया कि बर्थ के 1 घंटा पहले शुरू करें और पहला 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रहे. बिकॉज पहले 6 months में 100% ऑफ द बेबीज नीड्स आर देयर इन द ब्रेस्ट मिल्क. बेबी डजंट हैव टू ड्रिंक एनीथिंग, नो वाटर. Baby doesn't need anything outside. Everything what the baby needs is given by the mother. And demand feeding, on demand feeding. जब भी baby की ज़रूरत है, mother is there. So mother and baby need to be together, available. There is something called as rooming in, wherein, you know, the touching each other and the feeling of being together with feeding, you know, everything adds to the mental and physical health of the baby and the mother. तो पहला 6 months exclusive. 6 months के बाद 6 months से 1 year तक बेबी का 50% रिक्वायरमेंट्स ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है और 1 year से 2 year तक 1/3 ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. तो ये 6 months के बाद वी हैव टू सप्लीमेंट समथिंग टू द बेबी. ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग ही देते रहो, बेबी विल गेट माल नरिश्ड. देयर कैन बी माल नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन. तो 6 months से वी स्टार्ट एडिशनल. बेबी भी तैयार है एक्सेप्टिंग to accept other foods. So at that time we add up other foods depending on the requirement of the baby. That is complementary feeding and it is also very important. Wow, very greatly answered, ma'am. एक यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होता है मैम कि how long should a child be breastfed? Yeah, so normally what is recommended is 2 years. 2 years is till 2 years we need to feed the baby and everybody has to, you know, पहला 6 months you give that much time. 6 months से 1 year जी थोड़ा frequency कम, 1 year to 2 year maybe you can reduce, but then yes, the breast milk has to be given for 2 years. ओके. अच्छा मैम, क्या होता है कि मतलब जो मदर्स हैं, ठीक है, आपने ये तो बताया कि जो बच्चे हैं, जो किड्स हैं, उनको इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं. एक्चुअली बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उसका तो हमने थोड़ा ही जिक्र किया क्योंकि लेकिन मदर्स को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फायदे होते हैं? हाँ, तो पहले बेबी का खत्म करते हैं. बिल्कुल. हाँ, क्योंकि अब ब्रेस्ट फेड बेबी इज अ हैप्पी बेबी. हाँ, तो पहले तो उसको इन्फेक्शंस बहुत कम होते हैं. नॉट ओनली दैट, वो जो ब्रेस्ट मदर का मिल्क है ना, वो नेचुरल है, इट्स नॉट एडेड मिल्क. तो अ बेबी हु ग्रोज अप, तो उनको ना ओबेसिटी कम होता है, उनका लिपिड प्रोफाइल्स अच्छा है, उनको हार्ट अटैक्स एंड हाइपरटेंशंस आर लेस. नॉट ओनली दैट, एलर्जी इश्यूज लाइक आस्थमा, स्किन एलर्जी, देन देयर आर सो मेनी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस व्हिच कैन हैपन, वो सब कम होता है बेबी को. So in general, that baby is more intelligent, more emotionally secure and healthier. But what about the mother? As soon as the baby is born, जब baby feed करता है, तो there is a mothering hormone
It's also called as a love hormone, oxytocin. तो वो जब रिलीज होता है तो मदर का जो तनाव था ना, तो it helps to reduce it in a big way. She feels happier. Then it also helps her to love her baby more. And immediately, you know, as soon as she starts suckling and वो जो hormone release होता है तो uterus starts contracting. और उसमें से bleeding कम होता है. अगर something is retained, like say placenta या membranes का कुछ भी पदार्थ अंदर है remaining, it all comes out. Okay. And these mothers are protected from breast cancers and ovarian cancers in future. Breastfeeding plays a big role in this. So some mother who has, you know, taken time and, you know, been able to feed the baby enough is actually protected from breast cancers and ovarian cancers, which is very important. So it's something, so the nature has designed this. Yeah. Who are we to, you know, try to, you know, prevent. There's no technology, no science bigger than the creation. और जैसा श्रोताओं से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये सिर्फ बच्चे के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि माँ के लिए भी उतना ही फायदेमंद है. तो प्लीज ब्रेस्ट फीड द बेबी एज मच एज पॉसिबल. अच्छा मैडम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो प्रिकॉशंस होते हैं बाय मदर्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, वो क्या क्या होते हैं? Yes, so mothers have to take care of themselves and the baby too. तो खुद के लिए they have to have a good nourishment, पानी adequately they have to drink. They must also have good calcium because उनके बोन से जो कैल्शियम है वो मिल्क में चला जाता है बेबी को. So whether the mother is good or not, the baby takes its calcium from the mother. So mother has to be adequately stocked with her calcium, with her nutrients. And she must also be aware कि जो भी अगर for some reason she has to take a medicine, that medicine has to be safe because it will go through the milk to the baby. So she has to be careful that she takes safe medicine, and when she goes to a hospital or the doctor, she must say that she's breastfeeding, so the doctor is careful about what medicines to give her. मतलब जो भी वो मेडिसिन दे रहे हैं, they will be, you know, baby friendly. Yes, absolutely. सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं मैडम. हम ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, हम अपनी तरफ से तो इनिशिएटिव ले ही रहे हैं, जो भी गणमान्य हैं, जो नागरिक हैं, वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल इनिशिएटिव है ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो क्या क्या है? तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स आर ह्यूज. मतलब इतना ज़्यादा, आई मीन देयर इज सो मच ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइव एक्चुअली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. तो it is like UNICEF, WHO, the International Labour Organization, Indian government, and every government. They have their measures in place. So one is MAA, Mother's Absolute Affection. This is now an initiative which is started by our government. Wow. In which they say initiate breastfeeding within 1 hour, exclusive breastfeeding for 6 months, continue breastfeeding for 2 years. Training is given to nurses, ASHA workers, midwives, so that all this information goes to the mother, her family. Every mother needs a very supportive family. And then there are, you know, initiatives at the workplace. At the workplace, what are the initiatives? They get lactation breaks. Lactation break means you get a good space where she can express the breast milk. There are breast exclusive breastfeeding place in every workplace. Yes, which must have a small refrigerator. It must have a power point so that breast pump agar use kar rahe hain, to it should be able to express and store it in the refrigerator. So these breaks are normally accepted by everybody. To lactation breaks, perhaps a longer break from work so that the mother and the baby can be together. Paid breaks. So these are things which are, you know, being practiced by many organizations. And then there is something called as Breastfeeding Promotion Network of India. There is a World Alliance for Breastfeeding Action. There is so much. And what else do? They regulate the marketing practice. कौन से marketing practice of formula feeds? Formula feeds को बेचना है, तो they message in a big way. That message reaches everybody. हमारा breastfeeding का message पहुंचा नहीं पहुंचा, formula feed का message तो पहुंच ही जाता है. तो their regulations are on to control and limit what they are saying, so that the right message goes to the mother. So this is like a global initiative. Everybody is aware, and there is a drive. And in India, what they say is 54% of the women are exclusively breastfeeding for 6 months. This has to be increased. World over, it is about 44%. That's all. So it's like the bulk of the population are still not doing exclusive breastfeeding. So means the global initiative, it's very, very important. So from every corner, it is from medical level, from corporate level, from government level, society level, everywhere we know and give the importance that the breastfeeding has to be done.
in what I way think it is the to be. right information is going to our listeners today. And as you know, we are having Dr. REVATHY Ramaswamy, senior gynecologist from Apollo Sikandrabad, and she has been giving great information to our listeners. So we will back to you next time and with next prestigious guest. So for this time, thank you so much, and thank you so much, Dr. REVATHY, to be here in our studio. Thank you very much for having me here and chat with you and share something with all of us, in fact. Yeah, listeners of All India Radio Hyderabad. Thank you so much, ma'am. Great to have you. Thank you so much. विश्व स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में माँ का दूध अमृत धारा इस विषय पर डॉक्टर रेवती रामस्वामी से सीमा कुमारी की भेंटवार्ता अभी आप सुन रहे थे। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम एवं संपूर्ण पोषण है। स्तनपान बच्चों को खिलाने का एक सबसे बेहतर प्राकृतिक उपाय है। और बहनों, इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम महिला संसार समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह मंगलवार के दिन दोपहर 2:30 पर इसी मीटर्स पर मेघना के साथ। नमस्कार।